Hey guys, what's up? So many of you are requesting that how we can go about preparing ancient and medieval history और इस कोर्स में हम बात करेंगे कि आप एंशंट और medieval हिस्ट्री जो कि काफ़ी टफ टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए हाउ कैन यू क्रैक दोज टॉपिक्स. सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रोमन सैनी and if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star, do like share it as much as possible with others, and if you have doubt or queries or if any feedback you can ask in the comment section below. And for all the awesome courses you can follow me on Unacademy, this link. Now, objective of this course is to suggest the best way to tackle this often dreaded subject. Like काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि भाई एंशियंट हिस्ट्री की कौन सी बुक पढ़े, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री की कौन सी बुक करें. मॉडर्न हिस्ट्री like more or less people are clear. I have also made a lot of strategy lessons on modern history, but ancient and medieval history people are not clear about what they should study and what they should not study. So that is why it has to be done like that. Second is to maximize the marks you can score in both prelims and mains. This is the second point you have to keep in your mind, that this is totally related to the marks. It has nothing to do with your knowledge. I don't want to increase your knowledge in ancient and medieval history. I just want you to get more marks. Third point is to understand the syllabus in and out. First of all, you will need to understand syllabus. Only then you can proceed further and develop an effective strategy to prepare for it in for 15 days and polish your note making skills among others. Is that clear? So these are the three main objectives of this course. Lessons on this course will include like what is the basic approach to ancient and medieval history, then the detailed syllabus of the subject. We will discuss what UPSC expects from you, how should your preparation go about, your 15-day strategy, how can you become from novice to master, and how can you make effective notes for ancient history and medieval history, and finally the important topics in these subjects. Target audience includes UPSC CSE aspirants, candidates appearing for state PSCs, aspirants other UPSC exams like CAPF, CDS, etc. So let's continue with this course. Thank you for watching this lesson. Have an awesome day. Now many of you wonder like how we should approach. Like it is literally अगर if you are a new aspirant ऐसा लगता है कि समुद्र में कहीं फंस गए, because there is so much information on ancient India and medieval history. I tell you there is so much information as compared to the questions asked. For example, medieval India में से if you leave 2016 hardly any questions were asked, but people study it for 6 months. NCERT पढ़ लेंगे, ये पता नहीं किताबें. See, that is not the approach how you should approach ancient and medieval history. So that is the first thing first. The basic approach has to be very clear for ancient and medieval history. This is presented by me, Roman Saini. And if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star, do share it as much as you can. It will help a lot of other people, and do watch it completely. Now, why study for ancient history and medieval history? First of all, this is the first question. See, ancient history and medieval history, they have a significant weightage in both the prelims as well as mains. This is the first and the important point. If both of them combined together have like 10% weightage, and it is heavily covered directly in GS paper 1, especially ancient history is like every year like 2-3 questions are fixed. Offices during medieval kingdoms, literary books, etc. are frequently asked question. This is how they ask. For example, they will ask who is the tax collector, who is the treasurer, who is the senapati. All these kind of questions are asked, and they will ask the typical name. For example, they will ask Tamil Nadu में कौन सा नाम होता है and all that, or they will give that name and they will ask which post is this. Now, since it is absolutely static, now you can't change ancient and medieval history, right? It is already fixed. वो तो हो चुकी है. Now, so the static source is, since it is static, so NCERTs are sufficient. By and large, NCERTs are sufficient. It does not include art and culture. उसके लिए if you want to read, you can read Nitin Singhania. Now, you have to remember that not all the questions can be answered. Even if a person has studied ancient history and medieval history for let's say 70 years of his life, मान लो कि वो 18 साल का था तो कॉलेज में घुस गया, BA भी करी, MA भी करी, PhD भी कर ली, and then he taught also and he read also and he wrote books also, सब कर लिया. Even after 70 years, there is no guarantee that he will answer all questions. Rather, nobody in this world can answer all questions unless the luck favors him. So it's absolutely clear that you also cannot answer all the questions in ancient and medieval history. So please do not waste time reading from many sources. कोई point नहीं है उसका, कोई भी point नहीं है. There is absolutely no point. You have to realize that importance in the paper is high. Questions तो आते हैं, ठीक है, but the trends are fluctuating. कभी 6 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 2 आते हैं, 6, 10, 12, 2. बट अगर 2 भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ गया? Does it mean you will stop reading it? No. For example, this year geography की static portion है, they did ask like 5-6 questions. Does it mean you stop reading it? No. Its importance cannot be neglected at any cost.
Questions are not necessarily easy and they can range between moderate and difficult. This is the most important thing. Questions are not easy, but like they are not very difficult also. They can be solved if you have read like 2 3 revisions ke baad you can read them. And it is essential to know the cultural heritage and richness of the country. That is why ancient and medieval history are part of the civil services course or SSC CGL or any government exams. It is very important that you know your cultural heritage, and that is why, that is the reason you should be knowing all this. Now, when it comes to analysis of subjects, 2011 you see 3 questions were there, but in 2016 10 questions came. Now, this does not include art and culture. There is a strong overlap between art and culture and ancient and medieval history. So, I have separated them. So, if you just focus on ancient and medieval history, this is the topics. This is the number of questions. As I already spoken, 2016 like 10% of the paper came from ancient and medieval history. Despite the fact trend is fluctuating, 5 6 questions come all the time. So, this is a significant amount. And even if I know that it's static and the factual information is there, तो रट्टा तो मारना पड़ेगा. Rote learning will help in ancient and medieval history. It is not so the case with modern history, but with ancient and medieval history, you have to memorize a lot. What is the, like, you have to keep an eye for details, especially the terminologies. They are like book writers, authors. इस book में क्या था, संगम literature, तोलका पीएम, सिलप्पा, like विलांगो एदिगाल, ये वो, सिलप्पा दिग्राम, all these books. Okay, मनी में गलाई. So these are the books. They'll ask who is the author, which is the context, which year, what is it written, which like duration. For example, it was written in Sangam literature or medieval. So all these things become like Prithviraj Raso and all that. So essential to know such basics even if you are not a UPSC aspirant. Okay, like again, like there is high potential to be confused. So clarity is must. You need to be very clear about these things. Otherwise you will forget them after some time. Revision is the key here. You have to revise it again and again and again. Unlike any other subject, here the revision is most important. And make your own notes. It's just facts. There is no concept. Geography, polity में आप थोड़ा बहुत concept लगा सकते हो. Ancient or medieval history में there is no concept. Even in modern history you can apply concept. Here you cannot. It simply means you either know it or you don't. It's as simple as that. Now, when it comes to approaching a topic as compared to other subjects, a particular structure can be followed while studying for ancient history and medieval history. For instance, if the topic is Mughal Empire, then the subheadings more or less will be like various Mughal emperors, battles fought by each of them. Now, the most important thing is socio-cultural contribution and the developmental things. क्या policy थी, कैसे offices थे, कैसे लोग थे during the rule of a particular king. Like Jahangir gave permission for the English to set up factory at Surat. This becomes very important. Or the abolition of jizya tax, which was like tax on non-Muslims during Akbar's rule. Now Akbar's Deen-e-Ilahi, its personal religion, Shah Jahan, Shah Jahanabad city, all these become very important, right? Other famous personality like Abul Fazl, Tansen, Birbal, 9 Navratan जो अकबर के हैं. So all these questions can be asked. Finally, it is a static syllabus. Confusion is almost less. The syllabus is same. It is an all-time UPSC favorite, especially in mains. It is there, so you have to do an effective study, and it can help you sail through the subject. And you have to do smart preparation. Don't cram all the points. You have to cram the good points, and correlate topics, make a network, and connect different items. It will help you to remember for a long term. So we'll continue the course. Thank you. Hey guys, what's up? So in this lesson we'll talk about detailed analysis of syllabus, plus I will be solving some MCQs and some mains question just to give you a perspective as to know, you know, that how what kind of questions are asked. आपको पता चलेगा कि भाई prelims में ऐसे आते हैं, mains में ऐसे आते हैं. So this will be talking, we'll talk about ancient and medieval history, and it will not include art and culture. And if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star, do rate it as much as possible. And these are the things that makes or breaks one's career. Everybody knows how to study geography, polity, modern history, but very few people actually go and read ancient and medieval history. So what should be an approach of an aspirant in this case? First of all, you should read syllabus in detail. That is what we are going to do here. Then you should solve previous year question papers. We will do it later on, but I'll just give you a glimpse of the kind of questions that are asked. Then we will shortlist the books, means that which are the sources which helps you in studies. Then we will talk about the study approach, how we should study these books and or the resources. Then whether should we go for coaching or personal notes. Then what should be our revision strategy, and then practice and repeat the same thing again and again. So syllabus for prelims is very simple. कुछ करना ही नहीं है, बस हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है. अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया
लास्ट 4000 साल की आपको आनी चाहिए उनके हिसाब से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके टिल टुडे। बट मेंस के लिए थोड़ा सा डिफाइंड है। एज यू कैन सी इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा मैंशनड है, बट इट इज सेज दैट फ्रॉम एंशंट टू मॉडर्न टाइम्स, इट मीन्स एंशंट एंड मिडिवल इंडिया इज कवर्ड। अगेन आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर के नाम पे वो कुछ भी पूछ लेते हैं। सो इवन योर नॉन आर्ट एंड कल्चर वाली हिस्ट्री भी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दीन इलाही पूछ लिया, अब वो टेक्निकली रिलीजन एंड फिलोसफी का पार्ट है, उसको आप एंशंट हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री में वो थोड़ा डिवाइड होता है, बट इट इज ह्यूज ओवरलैप। इट मीन्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इशूज। सो इट मीन्स कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में भी पूछते हैं। सो इज इट क्लियर कि वो एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री का अलग से मेंशन नहीं है, बट इट इन इंडियन कल्चर में इंक्लूडेड है एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री। सो इट इज मोर फोकस्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर। लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स, कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपीएससी में। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, द टर्म आरा घट्टा refers to, so what is ara ghatta? So it is a, like I think it's a Persian wheel used in the irrigation of the land. So like these answers can be wrong, so you don't worry about the answers, you just focus on the type of questions. अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दे फोकस ऑन टर्मिनोलॉजीज। सो अब आपने चाहे कितनी किताबें पढ़ ली हो, आपने कोई भी बुक पढ़ ली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू डू नॉट नो दी टर्म आरा घट्टा मीन्स दिस, देन इट इज़ यूजलेस। अगर आपको आरा घट्टा वर्ड या कोई और वर्ड होता है यहाँ पे और उसका मीनिंग नहीं पता, तो वो यूजलेस है आपकी पढ़ाई। एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यू माइट बी वेरी नॉलेजेबल और जीनियस, बट इट विल नॉट हेल्प यू हेयर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द वर्ड एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग। ओके, then what is are common to the historical places known as Ajanta and Mahabalipuram? What is common here? So both were built in the same period, both belong to the same religious denomination, both have rock cut monuments. So definitely अजंता एंड महाबलीपुरम अलग अलग पीरियड में थे। अब आपको एग्जैक्ट अगर ईयर भी नहीं पता है, इवन इफ यू नो लाइक रफली व्हेन दे वर मेड, देन इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, देन अगर आपको वो भी नहीं पता है कि मतलब ये कौन से रिलीजन के, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको मोटा मोटा भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा इससे, इवन इफ यू नो लाइक ग्रॉसली यू विल गेट द आंसर करेक्ट। नाउ विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर? सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम पीरियड, किस राजा ने बनवाया है और उसका रफली कब था, कौन से सेंचुरी में था। अगर इवन इफ यू नो दैट, दैट्स मोर देन इनफ। देन रिलीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिलोसफी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनली व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज देयर, रॉक कट है कि कैसा है। So here the answer is I think B, but you don't worry about answers, we will make separate courses on solution of ancient and medieval history, so you don't need to worry about that. With the reference to the religious history of India, consider the following statements. Okay, the concept of bodhisattva is central to Hinian sect of Buddhism. Like bodhisattva is the compassionate one on his way to the enlightenment, and bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on the path to it. अभी क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में घुस के पूछा है इन्होंने। आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म की हम बात करें तो बुद्धिज़्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट इतना डिटेल में घुस के पूछ रहे हैं कि बोधिसत्व क्या होता है, और वो हीनयान में है कि महायान में है कि दोनों में है, और उसका मतलब क्या है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग अमन रिलीजन, मतलब कल को जैनिज़्म में घुस के बहुत कुछ पूछ सकते हैं, बुद्धा के बारे में पूछ सकते हैं कि वो उनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, कौन सी कंट्रीज़ में हीनयान होता है, महायान होता है। So all these things become very very important. So as you can see, as I was already speaking about, that religion, philosophy, architecture, art form and time period, it becomes very very important. सोशियो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन, दीन इलाही पे क्वेश्चन आ सकता है कि उसके टेनेट्स क्या होते हैं, किसने फाउंड किया था, कौन से के कौन लोग उसको मनाते थे, क्या इज इट लाइक वेरी पॉपुलर, व्हाट इज द केस। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन? आप देख ही रहे हैं कि बार बार यही आ रहे हैं। सच श्योरेस्ट वे ऑफ एनहाइलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एज अ सोल, कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। सो अब आप देख रहे हैं अगेन लाइक जैन फिलोसफी में क्या होता है। अगर आपको बुद्धिज्म फिलोसफी में पता है कि कर्मा क्या कॉन्सेप्ट है, तो उससे काम नहीं होगा। यू नीड टू नो अबाउट what is the concept in Jain philosophy. So that is the level of questions they are asking you, so it's not very very easy for you to focus. Just remember that it is always good to know the basic tenets of all the religion, who is the founder के बारे में थोड़ा पता कर लिया, and what are the basic tenets. So more or less आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। Then which of the following characterizes the people of Indus Valley civilization? Again
कैन यू सी, दे आर नॉट आस्किंग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ फैक्ट्स पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग अबाउट देयर सोशल लाइफ. अगेन एवरीथिंग इज अ फैक्ट एट द एंड ऑफ द डे, बट ऐसा रैंडम फैक्ट नहीं पूछ रहे कि 1750 बीसी में था, कि 2000 बीसी में था, कि 3000 बीसी में था, कि 1000 बीसी में था, कि इस गली से उस तरह था, कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड. दे आर आस्किंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स, लाइक पीपल क्या करते थे, लोग क्या करते थे उस जमाने में. सो दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स. क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था भाई, कोई टेम्पल वेम्पल नहीं थे, ग्रेट पैलेसेस नहीं थे. दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज. यस, 100% करेक्ट. मदर नेचर पर उस टाइम काफ़ी, मतलब इफ़ यू गो, फीमेल वर्शिपिंग वॉज देयर. दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स एंड वॉरफेयर. अरे घोड़े ही नहीं थे उनके पास, कहाँ से वो चैरियट बनाएंगे यार. दे वर नॉट हैविंग लाइक दैट मेनी हॉर्सेज. हॉर्सेज वर एलियन कॉन्सेप्ट देन, कहाँ से चैरियट बनाएंगे. तो एनीवे, so answer is B, that is 2 only. So anyway, the answer does not matter, but if you know their social life, then only you can attempt such questions. The religion of early Vedic Aryans was primary. Again, can you see, again religion, philosophy, social life, architecture, ले दे के वहीं घूमते रहते हो ancient और medieval history में. So anyway, so it is like यज्ञास होते थे, नेचर की वर्शिप होती थी. एंड एक दो मेंस के भी देख लेते हैं. एंशियंट सिविलाइजेशन इंडियन डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ हैज इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट अ ब्रेक डाउन टू द प्रेजेंट डे. अब क्या होता था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पहले कुछ और ही रिलीजन होता था, कुछ और ही लैंग्वेज होती थी. नाउ द रिलीजन इज कम्प्लीटली गॉन, द सिविलाइजेशन इज कम्प्लीटली गॉन. सेम विद ग्रीस, सेम विद मेसोपोटामिया. बट इंडिया में अगर आप देखोगे, तब भी स्वास्तिक लगाते थे, अभी भी स्वास्तिक लगाते हैं. तो देर आर लाइक लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन. एग्रीकल्चर तब भी बैल से होता था, अभी भी होता है. तब भी मतलब दिवाली वगैरह, ये बहुत पुराने फेस्टिवल्स हैं. दे आर नॉट लाइक कि 100 साल पुराने फेस्टिवल नहीं है. लॉट्स ऑफ होली, दिवाली, दे आर लाइक ह्यूजली ओल्ड फेस्टिवल्स. एंशिएंट इंडिया में भी इनका मेंशन आपको मिलेगा. सो इट मीन्स कि हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, वो कल्चर हैं, वो सब चला आ रहा है. जैसे पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, शादी की जो रस्में हैं वो मोर और लेस सेम है. So that is why they remain same. And finally, you have one example: to what extent has urban planning and culture of the Indus Valley civilization provide inputs to the present day. So now they have like integrated the two different concepts कि आज की urbanization में उसका कैसे impact हो रहा है. So that is how they do it. So I hope you got the insights into the questions being asked in the syllabus. So thank you for watching this. Have an awesome day. We'll continue the course. Hey guys, what's up? So in this lesson we'll talk about how you can become a master from a novice in just 15 days time. So this lesson will talk about all the right approaches which you need to develop so that you can like get a lot of like edge towards your competitors, so that you can score a lot of marks in your prelims mains examination. What is an approach of an aspirant? So basically you go through syllabus, then you solve previous year question papers, then you shortlist the books or the resources, then you go for your study approach, and then you go through coaching and personal notes, then revision strategy, and finally you practice and repeat. Now before you start your 15-day strategy, I would request you to watch the course completely. There are a lot of good courses on ancient history by Agam Jain, IPS officer. So you can watch his courses. They are one of the best available online. So like he has like really like solved the issues of how to go about ancient history. Then please read the slides repeatedly so that you can actually understand what UPSC wants. सो अदरवाइज व्हाट हैपन्स इज, एक दो दिन आपको समझ में आएगा, फिर बाद में आप फिर भूल जाओगे कि भाई अच्छा यूपीएससी को ये चाहिए. सो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू दैट पेनफुल प्रोसेस. आई वांट यू टू फोकस ऑन द सिलेबस. लाइक सिलेबस को दिन में एक बार तो पढ़ना ही चाहिए. सामने अगर दीवार पे लगा दो, सो यू जस्ट गो थ्रू सिलेबस अगेन एंड अगेन. उससे क्या होता है, यू रिटेन स्टफ मच बेटर. Again, your aim is to clear the exam, not to become a scholar in the subject. It has to be very clear. And finally, you need to limit your resources. Otherwise, there is no end. There is no end of ancient or medieval history. आप 10 जन्म भी ले लो तो भी ख़त्म नहीं होगा. स्पेस की तरह, यूनिवर्स की तरह कभी ख़त्म ही नहीं होगा. Just don't try to become a scholar in the subject. Just focus on the words revise, repeat, revise, repeat. That is your only key mantra in preparation. Just revise, repeat. There is nothing else. This will work for 100% time. फॉर 90% ऑफ यू. 10% लोग या तो सुपर जीनियस होंगे या फिर उनको पहले से हिस्ट्री आती होगी, उनको समझ में शायद नहीं आएगी ये चीज़ें. बाकी 90% ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दिस. एंड रिमेंबर, इट इज़ बेटर टू स्टडी फॉर 50 days एंड गेट 85 मार्क्स देन लाइक स्लॉग फॉर 6 months एंड गेट 95% मार्क्स. तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का. सो ऑलवेज फोकस कि भाई जितना कम पढ़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सको, फोकस ऑन दैट. Now what should you wear schedule? Like these are the books you should be referring to. Ancient history में जैसे NCERT है, class 11th by R.S. Sharma, that is a good book. Then use medieval Indian NCERT class 11th by Satish Chandra.
एंड लाइक अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, जितना भी आप टाइम डिवोट करते हो दैट शुड बी प्रपोर्शनेट टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब 15 दिन मैंने क्यों दिए हैं इसको, मैं दे तो 50 भी दिन भी सकता था, मैं दे 100 भी दिन सकता था, बट आई हैव जस्ट गिवन 15 days फॉर यू टू गो थ्रू इट। व्हाई इज दैट? इट इज बिकॉज दैट इट इज अदरवाइज इट इज वर्थलेस, इट इज कम्प्लीटली वर्थलेस दैट यू गो थ्रू सो मेनी, लाइक इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन आने हैं 5, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे अच्छा आप एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के पे 45 days दो ना। So that is the important thing you need to understand. Always remember that time devoted should be proportionate to the questions asked. And there are other NCERTs of class 6, 7th and 8th. You should go through them as well. Now first of all, अगर मैं आपकी जगह होता या मैं एस्पिरेंट होता तो मैं क्या करता? मैं डे 1 और 2 पे क्लास 6 और 7th की NCERT पढ़ लेता, एंशेंट और मेडिवल हिस्ट्री की। देन नेक्स्ट 6 days में सिर्फ एंशेंट इंडिया पढ़ता, RS शर्मा। Then day 9 पे I would have studied NCERT class 8th. Now if you have read from some other sources, so these sources can be replaced from those sources, but time cannot be replaced. मतलब ऐसा मत करना कि तो सोर्स दूसरा लिया एंड यू कीप ऑन रीडिंग फॉर 2-3 months, वो सब मत करना, ठीक है? देन आई विल रिवाइज लाइक जितना भी मेरा हुआ है मतलब उसी दिन, एंड देन फ्रॉम डे 10 to 15 आई विल रीड माई मिडिवल इंडिया एंशियंट हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। मैं 5-6 दिन दूंगा मिडिवल इंडिया को, बट दैट्स अबाउट इट। सो इसके बाद वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो पीपल विल से कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट लाइक आई वुड नॉट सजेस्ट रीडिंग दैम। अदर सोर्सेज ऑफन यूज्ड का मतलब है कि लोग ये करते हैं, लेकिन आई डोंट वांट यू टू डू दैट। सी द थिंग इज देयर इज ऑलरेडी सो मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट दैट इफ यू जस्ट रीड एंशिएंट हिस्ट्री फॉर, अगर सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बात करूँ तो देर आर मोर देन 50 बुक्स या कोचिंग सेंटर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इट डज इट मेक सेंस कि आप वो 50 के 50 पढ़ो? अगर 5 दिन भी लगता है तो आपका ऑलमोस्ट 250 से 300 दिन चला जाएगा, ऑलमोस्ट आपके 9 से 10 महीने चले जाएंगे। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु स्टेट बोर्ड हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड क्लास 12th, this is you should stick to it all the time you need to stick to it. If it is very very important for your art and culture also, but all these three they are not required if you do everything else correctly. अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है and that you want to deal with that specific topic, then you can go for it. अदरवाइज आई वुड नॉट रिकमेंड एनी अदर सोर्स विच आई हैव मेंशनड। अदरवाइज आपको जैसे मान लो कुछ स्पेसिफिक डाउट है कि मतलब ताजमहल का आर्किटेक्ट देखना है तो सीसीआरटी की वेबसाइट पे चले गए, दैट मेक सेंस। अदरवाइज जो यहाँ पे लिखा है इतना भी अगर आप पढ़ लोगे सो दैट विल बी मोर देन इनफ। प्लस ऑब्वियसली यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। और अगर आप किसी कोचिंग वगैरह में जा रहे हैं तो उसके नोट्स भी पढ़ लेना। So that's about it for this. That is how you have to develop your 15-day strategy. Thank you for watching this. Have an awesome day. Hey guys, what's up? So in this particular course and lesson, we'll talk about how can you make effective notes in ancient and medieval history. It is very very important that you know exactly how you have to make notes. I'll give you some example of Indus Valley civilization, how I would have made notes if I would have. So अभी देखेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अलग अलग कर सकते हैं ताकि आपको जब रिवाइज कर रहे हो एग्जाम के पहले तो 2-3 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रोमन सैनी, एंड इफ यू फील कि कोर्सेज आपको हेल्प कर रहे हैं, डू गिव इट 5 स्टार, डू शेयर इट विद अदर्स एंड डू वॉच देम। सो व्हाई मेक नोट्स? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप लिखोगे, आप टाइप भी कर सकते हो लिख भी सकते हो, मतलब यू विल जॉट डाउन समथिंग। सो राइटिंग प्रैक्टिस विल हेल्प यू डेवलप योर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एबिलिटीज। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग नोट्स इवन इफ इट इज लाइक सिंपल आपको लगता होगा, लेकिन इट गिव्स यू राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू एनालाइज द क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट। And again, writing will help you organize your points, expression of content, etc. etc. It will also help you in better revision of the topics, and most importantly, retention increases with making notes. समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर एक चीज़ मैं बोलूँ तो जो चीज़ लिख लेते हो ना आप, उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीथिंग विच यू राइट, उसके लिखने के बाद इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस दैट यू रिमेंबर इट। सो बेटर रिविजन ऑफ टॉपिक्स, राइटिंग विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्टेंट एक्सेट्रा। Now how to make notes? There are two kinds of note making. One is linear note making, one is mind mapping. अबे linear note making क्या होती है? आपको ये जो notes दिख रहे हैं, these are typical example of a linear note making. एक bullet point, उसके अंदर 2 सब bullet points, फिर एक चार bullet points हैं यहाँ पे।
तो आप एक मेन पॉइंट लिखते हो, उसके अंदर फिर 2 पॉइंट लिखते हो। जैसे मान लो ये हेडिंग हो गई आपकी हाउ टू मेक नोट्स, और उसके अंदर फिर आपने 1 2 3 4 4 आपने की पॉइंट्स लिखे हैं। एंड आफ्टर अंडर दैट यू कैन सी हेयर, so linear note making involves writing main points with keywords, highlighting and underlining, and it is best when you want to summarize something. Okay. Mind maps are more of a visual representation. For example, जैसे आपका ये ब्रेन मान लो, तो ऐसे 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 करके इफ़ यू सी कि लाइक स्टार लाइक ऐसे मतलब आपके चारों तरफ वो निकल रहे हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी डन। नाउ नोट्स मेकिंग फॉर एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री, अब इसके स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं। सो नेवर राइट सेंटेंसेस, मतलब अनलेस की इट इज इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मतलब यूजुअली, बट यू हैव टू फोकस ऑन कीवर्ड्स, मतलब अननेसेसरी सेंटेंस मत लिखना विदाउट कीवर्ड्स। द सब्जेक्ट इज सो वास्ट दैट हैंड रिटन नोट्स विल मेक द प्रोसेस स्मूथ, 100% यू हैव टू फॉलो दिस। इतना ज़्यादा पढ़ने को है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिख लोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नाउ फोकस ऑन टाइमलाइंस एज इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बीइंग वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। This topic can become very very confusing, and do not, please do not duplicate, that is do not write the same sentences again and again. It is not worth it, please do not do that. It is totally useless otherwise. Okay. And in short, making notes is better than not making them. Some people say कि सर हमारा सारा टाइम नोट्स मेकिंग में ही चला जाता है। अरे तो भाई पढ़ के क्या करोगे जब एग्जाम में याद ही नहीं आएगा, तो बिना नोट्स बनाए तो कुछ होना जाना है नहीं। सो इट्स ऑलवेज गुड दैट यू मेक नोट्स, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल आई show you how my notes were there. So इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, मैं सिर्फ लिम्पल लिखूंगा, ऑल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, ओल्डर देन द चैल्कोलिथिक कल्चर्स। ओके। एग्जिस्टेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिटी ऑफ हरप्पा डिस्कवर्ड इन 1921। ओके। वाइड स्प्रेड, कितना वाइड स्प्रेड है भाई, जम्मू इन द नॉर्थ से लेके नर्मदा इन द साउथ, एंड फ्रॉम मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान एक जगह है जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान के एरिया में मिलती है, एंड मेरठ इन दी नॉर्थ ईस्ट, मेरठ कहाँ पे पड़ता है, दिल्ली से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे आप यूपी साइड में, गाजियाबाद के बाद यूल फाइंड मेरठ। एज सच इट वॉज बिगर देन दी सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। अब मेरे को इतने से पढ़ने से काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन मिल गया, कहानियाँ नहीं जाननी मेरे को यहाँ पे। सो टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, ये नहीं कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, नहीं। सिविलाइजेशन इज वेल नोन फॉर टाउन प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। हरप्पा एंड मोहनजोदारो हैड अ सिटाडेल, ओके, दिस इज द की वर्ड, सो यू हैव टू मेंशन इट, बिलो विच वाज द प्रेजेंट सिटी, तो मतलब एक ऊपर टाउन हो गया एक नीचे टाउन हो गया, सिटाडेल मतलब ऊपर वाला टाउन। हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स फॉर कॉमन पीपल, ठीक है। इंटरेस्टिंग हेयर इज दैट हाउसेज इन द सिटीज फॉलोड अ ग्रिड सिस्टम, अगेन अ कीवर्ड, एंड द लेन्स ले एट ऑलमोस्ट राइट एंगल्स टू ईच अदर, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल 90 डिग्री। मोहनजोदाड़ो का स्ट्रक्चर था एक ग्रेट बाथ विच वॉज अ टैंक सिचुएटेड इन द सिटाडेल माउंड, ठीक है। अब इसका क्या होता था, पर्पज ऑफ रिचुअल बाथिंग एंड वॉज वाइटल इन मैनी रिलीजियस सेरेमनीज। बस ये कीवर्ड्स पे खेलते रहो और यू विल गेट लाइक लॉट ऑफ मार्क्स। ओके। नाउ ग्रैनरी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। अब ग्रैनरी में क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेन भरेंगे, ग्रेन क्यों भरेंगे, मतलब ताकि मतलब स्टोर कर सके ताकि वो खराब ना हो। इट वॉज यूज फॉर थ्रेशिंग ग्रेन, एंड बिकॉज वीट एंड बार्ले हैव बीन फाउंड इन द क्रेवाइसिस, क्रेवाइसिस का मतलब होता है जो छेद टाइप होते हैं, मतलब लंबे लंबे जिसमें दाने फंस सकते हैं उसको। बेक्ड ब्रिक्स भी यूज होती थी, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, इट लीव्स अ ग्रेट इंप्रेशन अबाउट द फोरसाइट एंड विजन ऑफ द हरप्पन्स, मतलब विजनरी थे। दे ऑल्सो इंडिकेट दैट अटेंशन वॉज पेड टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस बाय द पीपल। ओके। Now regarding agriculture, evidence suggests that Indus people produced wheat, barley, rye, peas, etc. in addition to sesame and mustard. Now rice has been found in Lothal around 1800 BC. So that means rice was also there, wheat was also there, barley was also there. Agriculture, sesame, mustard is सब थे. Now presence of numerous seals, uniform script, regulated weights, measures in a wide area suggested the presence of well networked trade. Can you see all the keywords are there? अब कितना टाइम लगेगा आपको ये 3 स्लाइड पढ़ने में? It will not take you more than 1 minute if you go very fast. At the time of exam, people go fast. Now Indus people earliest to produce cotton and therefore was called Sindhon by the Greeks. आ सकता है MCQ, बिल्कुल आ सकता है. Why they were called Indus? Because cotton Sindhon, okay, it was derived from the word Sindh, so that is why they were called as Indus. Now domestication of animals was there. Oxen, buffalo, sheep, goats, pigs were domesticated by Harappans. Horse remains are found in Sarkotda in West Gujarat. However, civilization was not horse centered. तो कल को बोले कि chariots थे कि नहीं, तो आंसर इज नो. एंड लाइक
बार्टर सिस्टम होता था, मतलब करेंसीज उतनी नहीं थी, फूड ग्रेन्स एक्सचेंज करते थे फॉर फिनिश्ड गुड्स, एंड दे हैव प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी. ओके. एंड कंक्रीट एविडेंस तो नहीं था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बट द कंटिन्यूटी फॉर ऑलमोस्ट 600 years टेल्स अस अबाउट द कल्चरल होमोजिनिटी. Okay, so it means the culture was very conducive so that they could continue for more than 600 years. And nature was keenly worshipped by the inhabitants of the civilization. Sculptures, seals, terracotta figurines, they indicate the worship of mother goddess, male deity, animals and trees among others. And Harappan script are yet to be deciphered. They are called as Bostro of Eden. And अगर वो decipher हो गई तो then you can see कि भाई वो क्या लिखते थे, and that might give like rise to कि why the decline of the famous civilization क्यों हुआ. सो इससे क्या पता चलता है? वाइल मेकिंग द नोट्स राइट द कीवर्ड्स, फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू थिंक आर इंपॉर्टेंट, रीड एवरीथिंग फ्रॉम द पर्पस ऑफ एग्जाम. अब उसमें कोई कहानी नहीं थी, मतलब ऋतिक रोशन टाइप मूवी नहीं थी कि भाई ये हो रहा था वो. इट इज़ नॉट टू एनहेंस योर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट. दिस इज वेरी डिफरेंस बिटवीन द एग्जाम एंड द इंटेलेक्चुअल्स. एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड what is important and what is not. Finally, use the syllabus while you are making notes. Take a detailed note of the syllabus first, know it thoroughly. Only then you will know what is important and what is not. Obviously, filtering is the only way out in the vast amount of resources available. And please do not duplicate notes. Like बहुत सारी photocopy और ये सब मिलते हैं, मतलब कोई point नहीं है उसका. So just write it down once and it increase your chance of retention. So thank you for watching this lesson. Have an awesome day. Hey guys, what's up? So this is the last lesson in the course on how to develop the right approach towards ancient and medieval history. And in this course, we will be discussing the important topics of how you should go about studying them. This is presented by me, Roman Saini. And let's start with the important topics which will help you in cracking ancient and medieval history portion. See, there are a lot of other topics also, but how do you define a topic as important? Any topic from which the odds of questions coming are very high. So if you analyze last 10 years question paper, these are the topics from which questions are asked. There are other topics also, but from which questions are not asked. Does it mean कि उसमें से आएंगे नहीं? ऐसा नहीं है. क्वेश्चंस किसी में से भी आ सकते हैं, लेकिन इनमें से चांस बहुत कम है उन टॉपिक्स में से जो यहाँ मेंशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पूछते हैं भाई न्यूमिस्मेटिक्स क्या होते हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर. कैसे कैसे जानते हो कि ऐसा होता था 2000 साल पहले? इट इज़ बिकॉज सम सोर्सेज आर देयर, राइट? दैट इज़ वाई वी नो इट. देन देर आर हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस, जो बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द रीजन्स वाई वी लाइक ये ऐसा एग्जिस्ट करता है जो भी है. सो यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट दैट ब्रिक बाय ब्रिक. देन देर इज़ लॉट ऑफ स्टोन एज. स्टोन एज में क्या था, बेसिक क्या होता था, कैसे टूल्स होते थे. दीज आर द क्वेश्चन दे आस्क अ लॉट. Then Chalcolithic period. Why it is called as Chalcolithic? What is the meaning of word Chalco? Which are the civilizations of this period? Then Harappan culture, that is Indus Valley civilization. Why it is called as Harappa? Why it is called as Mohenjo-daro? Why it is called as Indus Valley civilization? Why is it called as Bronze Age civilization? It is called as Harappa because it is found in the Harappan region. That is the modern site of Harappa. It is called as Indus Valley because it is found near Indus Valley. It is called as Bronze Age civilization because bronze was used widespread these days. That is how you have to go about it. देन एडवेंट ऑफ द आर्यंस. नाउ व्हाट वर आर्यंस, हु वर आर्यंस, कहाँ से आए, कौन सी सबसे कॉमन थ्योरी है. डिड आर्यंस वाइप्ड आउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच गॉड्स वर दे वर्शिप, हाउ डू दे स्टार्टेड ऋग्वेदिक एज एंड ऑल दैट. Then rise of the Vedas. Then again, like first it is divided into two parts. One is Rigvedic age, one is the later Vedic age. Rigvedic age early Vedic age थी, उसमें वुमेन की कंडीशन अच्छी थी. मतलब these are the things which you need to know. Later Vedic age में they deteriorated, like सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद. That is called as the later Vedic period. However, the conditions of female different, then they further worsened off till the Gupta period came. Okay. Then it talks about Jainism and Buddhism. So Jainism and Buddhism, obviously they are the most important thing. हर साल एक क्वेश्चन सेट है, आना ही आना होता है. कैसे क्वेश्चन आता है? वो पूछते हैं कि भाई जैनिज्म में ये नहीं पूछते कि महात्मा बुद्ध कहाँ पैदा हुए, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, या महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए थे. ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते वेयर वर दे बॉर्न एंड स्टफ लाइक दैट. दे आस्क वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर डॉक्ट्राइंस कि ऐसा होता था, वो ऐसा मानते थे, या लोग फॉलोअर्स ऐसा करते थे. दीज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड, नॉट स्टूपिड क्वेश्चंस. देन मगध एम्पायर. हाउ इज मगध एम्पायर लाइक, जो बहुत बड़ा होता था उस टाइम पे, कौन कौन सी उसमें डायनेस्टीज होती थी. देन मॉडर्न एज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मगध एम्पायर लीड्स टू मॉडर्न एज. अशोका, okay, Bindusar, Chandragupta Maurya, they are all related. Now visits of foreign travelers and accounts they produced, very very important. Yan, Hyun Sang, okay, these become very very important. आपके
जो ग्रीक कौन थे, मेगस्थनीज, ऑल दीज पीपल जो आए थे, एंड दे रोट अ लॉट. ओके. द एज ऑफ द सातवाहन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे वर बेस्ड आउट ऑफ current South India, Andhra Pradesh mainly. Then Chola, Pandya, and Chera kingdoms of the south. Again, their symbols or their philosophy, what kind of meetings were there, symbology, etc. Then Gupta period become very very important. It is called as the glorious age of ancient India. Why do they call it? What were the reasons? Women's position and respect and power and authority were restored. Then post Gupta में कौन थे? Vardhan dynasty, contemporary Guptas. You need to know about that. Then tripartite struggles in 6th to 7th century में Pratihars, Palas and Rashtrakutas. Then the Rajput age came. Then obviously like Turkish conquest of India happened, and then it was Delhi Sultanate for 300 years from 1198 till 1526 roughly. Then there were 5 dynasties, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी. Now we are starting into the medieval India. दैट इज स्लेव डायनेस्टी. उसमें क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनके नाम सुने होंगे आपने. सो दे आर ऑल बिलोंग टू स्लेव डायनेस्टी. दैन अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी. तुगलक का तो सबने सुना ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, द एक्सपेरिमेंट्स, ऑल दैट. सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी में लाइक सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दे एस्टेब्लिश्ड आगरा एंड ऑल दैट. And they were finally defeated by the Mughal Empire. Mughal like Babur came and defeated them in 1526, and that's how the Mughal Empire started. Then Vijayanagara kingdom is very very important. Bahamani kingdom, they are all South Indian kingdoms that also every year they ask one or the other question from them. Obviously, I was talking about Mughals. So they started from 1526. The golden era started till lasted till 1707 when Aurangzeb died, and from 1707 till 1857 they are called as later Mughals, and after 1857 there are no Mughals. So great Mughals are from Babur to Aurangzeb, as I was saying, from 1526 to 1707, roughly 200 years. Then you have arrival of the Portuguese in 1498, Vasco da Gama. Then later Mughals start from again 1707 till 1857. Then rise of Chhatrapati Shivaji, like princely kingdoms also started during that time, Mughals, Marathas. So all these becomes very very important. Now the rest of the princely kingdoms will fall in modern India. So these were the important topics. See, you might think यार इतना कौन पढ़ेगा, क्वेश्चन आते नहीं, but ऐसा नहीं है. If you give like 15-20 days to it, it will be more than enough, and it is not as difficult as it may seem. Just make quick shorthand notes if possible, and smart note making techniques like mnemonics, flowcharts, tables, etc. They will help you arrange the information systematically. So thank you for watching this lesson. I hope you do great in ancient and medieval history. Have an awesome day.